Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, welcome back to my new lecture. In this lecture I will talk about hormones of posterior pituitary and median lobe or intermediate lobe. As I talked in my previous lecture, that posterior pituitary by itself do not synthesize any hormone. It just stores two hormones, ADH and oxytocin. The synthesis of these hormones occur in the cell bodies of neurons which are located in hypothalamus. These are the cell bodies of neuron which synthesize ADH, and these are the cell bodies of neuron located in hypothalamus which synthesize oxytocin. As you know that both oxytocin and ADH, they are peptide hormones, and for the synthesis of peptide hormone, first messenger RNA is produced, gene is expressed, messenger RNA is produced as a result, messenger RNA leave the nucleus, enter into the cytoplasm. In the cytoplasm it transforms into the protein or peptide. The peptide is then stored in the vesicle. The vesicle are then transported through the axon and reach to the end of the neuron. And here they are then stored, ADH hormones. And here, same is the case here, that oxytocin, for the synthesis of oxytocin, gene is expressed, the gene messenger RNA is produced, messenger RNA move into the cytoplasm, and messenger RNA then transform into peptide, oxytocin hormone then oxytocin hormone stored in the vesicle. The vesicle are then transported through these axons and reach to the end of these neurons, and here they are present in stored form. Now, first I will discuss ADH hormone, its function, and main stimuluses for its release, and its function also, that what then ADH perform, what is its function. Then I will talk about oxytocin. So ADH, the word ADH means antidiuretic hormone. The word diuresis means urine formation. So any substance which inhibit or which decreases urine formation, it is called antidiuretic. So hence the name indicates that ADH, it is antidiuretic hormone, means that it decreases or it inhibits urine formation. So the main function of ADH is to maintain the water concentration in the body. So it means कि मेन स्टिमुलस इसके लिए फिर क्या है, एडीएच की सिक्रीशन के लिए मेन स्टिमुलस तो फिर इसके लिए ये है कि जब वाटर की कंसंट्रेशन ब्लड में कम हो जाए. वाटर की कंसंट्रेशन सिंपली मीन जब ब्लड की वॉल्यूम ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, तो इट मीन कि वाटर की कंसंट्रेशन ब्लड में क्या हो गई, कम हो गई. सो द फर्स्ट स्टिमुलस for release of ADH is decrease in blood volume. Of course जब blood का वॉल्यूम डिक्रीज होता है, it mean कि वाटर का वॉल्यूम जो है बॉडी में डिक्रीज हो गया. So blood का वॉल्यूम, two main reasons. The decrease in blood volume is because of two main reasons. One reason is dehydration जब बंदे को हो जाए. So one reason is dehydration. Dehydration mean loss of water जब हो जाए. Loss of water from the body, which can be in the form of sweating, या तो sweating के फॉर्म में हो सकता है, या जो है इंजरी के फॉर्म में भी हो सकता है, और या जो है यूरिन फॉर्मेशन के फॉर्म में भी हो सकता है, या डायरिया बंदे को जब हो जाए उसमें भी डिहाइड्रेशन होता है, बंदे को लॉस ऑफ वाटर होता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता नहीं है, ब्लड फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता नहीं है इंटेस्टाइन में, वाटर जो है मोशन के फॉर्म में निकलता है. तो इसकी वजह से भी, मोशन या डायरिया की वजह से भी बंदा डिहाइड्रेट हो जाता है. तो उसके रिजल्ट में फिर क्या हो जाता है, उसके रिजल्ट में ब्लड का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है. तो जब ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है फिर एडीएच जो है रिलीज होता है, क्योंकि एडीएच का मेन फंक्शन है ब्लड में वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना. अब कैसे इन न्यूरॉन्स को पता चलता है कि अब ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज है, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा. सो द फर्स्ट स्टिमुलस फॉर द रिलीज ऑफ एडीएच सेक्रेशन इज डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम व्हिच कैन बी बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन. अनदर कुछ बुक्स में डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम भी लिखा है. So decrease in blood pressure. Decrease in blood pressure. Of course, जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज होगा, क्योंकि जब वॉल्यूम ऑफ ब्लड ज़्यादा होता है तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि ब्लड वेसल पे प्रेशर ज़्यादा जो है अप्लाई होता है. तो जब ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. तो आप तो MCQs में ऐसे भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग is the main stimulus for the release of ADH, decrease in blood volume.
dehydration, decrease in blood pressure, all of the above. So all of the above is the correct answer. But the main stimulus is decrease in blood volume, and the decrease in blood volume can either be because of dehydration or it can either be because of injury. अगर इंजरी हो जाए, ब्लड लॉस हो जाए, उससे भी ब्लड वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो जाता है, और उसके रिजल्ट में ऑफ कोर्स क्या होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा. तो ऑल दीज आर द मेन सिम्टम, मेन स्टिमुलसेस फॉर द रिलीज ऑफ एडीएच. इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद में बात करूंगा कि इन न्यूरॉन को कैसे पता चलता है कि ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, अब हमें एडीएच जो है रिलीज करना चाहिए ताकि वो किडनी से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करे, ताकि ब्लड का वॉल्यूम जो है वो मेंटेन रहे. So the another stimulus for the release of ADH is increase in solute concentration in the blood, or when osmolarity of the blood increases, or when blood become hyperosmotic. So another main stimulus क्या है decrease in blood volume के बाद, कि जब ब्लड में सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, या ब्लड हाइपरऑस्मोटिक हो जाए, या ब्लड की ऑस्मोलरिटी जो है वो हाई हो जाए. All these have same meaning. सल्यूट कंसंट्रेशन का ज़्यादा होना मीन ब्लड हाइपरऑस्मोटिक हो गया, या ब्लड की ऑस्मोलरिटी ज़्यादा होगी, सल्यूट कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा हो गए. अब ऑफ कोर्स जब डिहाइड्रेशन हो जाता है, ब्लड से जब वाटर जो है, वाटर की बॉडी से जब वाटर का लॉस हो जाता है, ऑफ कोर्स तो ब्लड तो क्या होगा, हाइपरऑस्मोटिक होगा, सल्यूट की कंसंट्रेशन तो ज़्यादा हो जाएगी. सो दिस इज द अनदर स्टिमुलस for the release of ADH when blood become hyperosmotic, or if solute concentration in the blood become high. Now, still the question remains that how these neurons come to know that now blood volume is decreased or blood is hyperosmotic. There are two main sources through which these neurons come to know about the decrease in blood volume and about increased solute concentration in the blood. The first message to the neuron about the decrease in blood volume passes from the blood vessels. So let's suppose here are the blood vessel. I will show here the blood vessel. So let's suppose this one blood vessel, and it passes here. So a blood pressure is, or blood volume is low, or blood, of course अगर blood volume low है तो blood pressure low है. So here are special receptors in the form of neurons which are called baroreceptors in the wall of vessel. So when blood pressure decrease, or blood volume decrease, then these receptors are stimulated. These receptors are called baroreceptors, but these baroreceptors are in the form of neuron. So this one neuron which extend from the blood vessel, when blood volume decreases, so this neuron become a nerve impulse initiate in it. इसमें nerve impulse initiate हो जाता है, तो nerve impulse जब initiate हो जाए, this neuron end here with this neuron. So when blood volume decrease or blood pressure decrease, a nerve impulse generate in these neurons. These neurons are sensitive to decrease in blood volume or decrease in blood pressure. So when blood volume decrease, a nerve impulse initiate here, and this nerve impulse reached here. So when it reach here, a transfer, the nerve impulse then transfer from here. Here it releases the neurotransmitter, the result of which now the nerve impulse initiate here in this neuron. So from here the nerve impulse reach here to the end of this neuron. And in response, the vesicular membrane fuse with the membrane of the neuron, and exocytosis occur. As a result, ADH is released here to this space, and from the here it enter into the blood. Enter into the blood. Into the blood, it reaches to the kidney. What it does in the kidney, I will talk about it later on. But let me talk about another stimulus. जब blood volume decrease हो गया, उसका पता इन न्यूरॉन को कैसे पता चला? ब्लड वॉल्यूम का डिक्रीज का पता इन न्यूरॉन को बैरोरिसेप्टर के थ्रू से चला, जो किधर प्रेजेंट होते हैं, जो ब्लड वेसल्स के वॉल में प्रेजेंट होते हैं. These are called baroreceptor. These are sensitive to decrease in blood volume or decrease in blood pressure. जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है या ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, दोनों सेम ही सेंस रखते हैं.
तो उसकी वजह से नर्व इम्पल्स इनिशिएट हो जाता है और नर्व इम्पल्स इधर पहुंच जाता है, इस न्यूरॉन को ट्रांसफर हो जाता है बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम दिस न्यूरॉन। तो फिर नर्व इम्पल्स इधर जो है इधर से नीचे आता है और एंड ऑफ न्यूरॉन तक पहुंच जाता है और इसके रिजल्ट में फिर एक्सोसाइटोसिस ऑफ दिस वेसिकल हो जाती है और एडीएच सीक्रेट हो जाता है। नाउ जब ब्लड हाइपरस्माटिक हो जाता है, जब सोल्यूट की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है ब्लड में, उसका पता इन न्यूरॉन को कैसे चलता है? उसका पता जब ब्लड यहाँ से पास हो रहा है, लेट्स सपोज द ब्लड इज पासिंग फ्रॉम द हाइपोथैलेमस एंड दिस ब्लड इज हाइपरस्माटिक, सो हियर इज द साइटोप्लाज्म of the neuron and this cytoplasm is hyposmotic compared to this hyperosmotic blood. So some water move from this cell body to the water is to the blood present in this vessel. As a result, this area of the neuron or the cell body of neuron, it little bit it constrict, it shrink. When it shrink, so as a result this neuron stimulate हो जाता है. Stimulate mean a nerve impulse initiate over here. When the nerve impulse initiate over here, it reaches here to the end of neuron. Again the same process occur, that the vesicle membrane fuses with the neuronal membrane. As a result, exocytosis occur and ADH is released. So therefore these neurons are also called osmoreceptor. Actually osmoreceptors are neuronal cell bodies which produce ADH neuron. So these are the osmoreceptors. Osmoreceptors. And then what this ADH does, it reaches to the kidney through the blood in the kidney. Nephrons are present. Let me write slightly above. So here are nephrons are present. So this nephron, this is the Bowman capsule, here is the proximal convoluted tubule, loop of Henle, and this is the descending loop of Henle. Here is the ascending loop of Henle, distal convoluted tubule, and distal convoluted tubule open into collecting duct. So here is the collecting duct. On the cells of collecting duct are receptors for ADH. Naturally, these cells are impermeable for water. And from where the water come, of course, you know that here are this is the afferent arteriole, these are the glomerular capillary, this is the efferent arteriole. So here the blood filter, and what filter? Water and some salt, some acid, etc., or glucose, etc., are filtered here, which is called glomerular filtrate. So this glomerular filtrate with a lot of water passes from the nephron. When the glomerular filtrate reach here, then ADH, naturally these cells are impermeable. So let's suppose this is ADH. The ADH come and it bind with its receptor. It makes permeable these cells for water. So here are some channels present in the cytoplasm of these cells of collecting duct. So when ADH bind with it, these channels, which are called aquaporine channel, they come and attach themselves with the cell membrane of these cells. And here are already some cells are present for entrance of water. So the water now enter through this channel into the cell, and from the cell it leave to the outside, and here blood capillaries, which are called peritubular capillaries, are present, and then water enter back into the blood. So in this way ADH help to maintain the water concentration in the body, because it reabsorbs the water from the kidney, which is filtered in the kidney. So this was the main function of ADH, that it maintains water concentration in the body. Now come to oxytocin. These are the oxytocin producing neuron, about which I already talked. Now when oxytocin is released during childbirth and in nursing or lactating women. ऑक्सीटोसिन जो है जब बच्चा पैदा होता है उस दौरान रिलीज होता है, और जब माँ जो है बच्चे को दूध पिलाती है
बचपन से जब बच्चा पैदा हो जाता है तो माँ जो है ऑफ कोर्स अपनी छाती से बच्चे को जो है दूध पिलाती है, तो इसको नर्सिंग वुमेन कहते हैं या लैक्टेटिंग वुमेन कहते हैं। सो इन शॉर्ट ऑक्सीटोसिन जो है बच्चे की पैदाइश से लेके जब तक माँ अपने बच्चे को मिल्क पिलाती है अपने ब्रेस्ट से, तो इस पूरी ड्यूरेशन के दौरान जो है ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। पैदाइश से लेके जब तक माँ जो है बच्चे को जो है नारिश करती है अपने ब्रेस्ट से, उस दौरान तक ये जो है रिलीज होता रहता है ऑक्सीटोसिन। सो व्हाट आर द मेन स्टिमुलसेस फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन? मेन स्टिमुलस ऑक्सीटोसिन के रिलीज के लिए क्या क्या है? द फर्स्ट स्टिमुलस फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन इज लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। इसका क्या मतलब है लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन? जब प्रेगनेंसी होती है, जब प्रेगनेंसी मीन व्हेन द फीटस इज इन द यूटेरस, सो ऑफ कोर्स at that time the uterus must need to be glandular and vascular। तो यूटेरस को ग्लैंडुलर भी होना चाहिए जब तक बच्चा जो है यूटेरस के अंदर होता है, और वास्कुलर भी होना चाहिए। क्यों वास्कुलर होना चाहिए? क्योंकि ऑफ कोर्स थ्रू द ब्लड वेसल ब्लड रीचेस टू द यूटेरस, और यूटेरस में प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है ऑफ कोर्स। सो प्लेसेंटा को ये ब्लड जो है ब्लड वेसल जो है ब्लड सप्लाई करता है, उसमें ऑक्सीजन भी होता है, उसमें ग्लूकोज भी होता है और न्यूट्रिएंट्स भी उसमें होते हैं, और वो फिर फीटस को जो है प्लेसेंटा के थ्रू जो है पहुंचते हैं। इस तरह फीटस जो है नरिशमेंट गेट करता है थ्रू द ब्लड ऑफ द मदर। सो इट इज वेरी नेसेसरी दैट एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी द यूटेरस मस्ट नीड टू बी वास्कुलर एंड ग्लैंडुलर। यूटेरस में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो न्यूट्रिशन प्रिपेयर करते हैं अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में, जो बच्चे के लिए इंतहाई जरूरी होता है। सो हु मेंटेन the uterus vascular and glandular, actually it is progesterone। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो यूटेरस को ग्लैंडुलर भी रखता है और वास्कुलर भी रखता है, और जब प्रोजेस्टेरॉन होता है तो ऑक्सीटोसिन प्रोजेस्टेरॉन ऑक्सीटोसिन के सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, तो ऑक्सीटोसिन न सिंथेसाइज हो सकता है, और ऑफ कोर्स जब सिंथेसिस उसकी नहीं होती तो रिलीज भी नहीं होता है। तो जब प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाती है, प्लेसेंटा डीजेनरेट होना स्टार्ट कर लेता है, और मेन सोर्स ऑफ सिंथेसाइजिंग एंड रिलीज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज आल्सो प्लेसेंटा। तो जब प्रेगनेंसी एंड को पहुंचती है तो प्लेसेंटा की डीजेनरेशन हो जाती है। जब प्लेसेंटा की डीजेनरेशन होना स्टार्ट हो जाती है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी डिक्रीज हो जाता है। दिस इज देन द फर्स्ट स्टिमुलस फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। फिर ऑक्सीटोसिन के जो सेल्स हैं वो फ्री हो जाते हैं फ्रॉम द इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। Then these cells start to produce oxytocin। ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर लेते हैं, और फिर जो है उसकी रिलीज भी स्टार्ट हो जाती है। सो द फर्स्ट स्टिमुलस फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन इज डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। नाउ another stimulus for the release of oxytocin or for the synthesis as well as for the release of oxytocin is stretching of the uterus or stretching of the cervix during parturition। parturition mean childbirth। जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त जो wall of the uterus या जो cervix है वो stretch हो जाता है, तो उसकी वजह से बैरो रिसेप्टर जो है उसमें बैरो रिसेप्टर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंड ऑफ न्यूरॉन, वो बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। वो बैरो रिसेप्टर इन न्यूरॉन तक वो पैगाम पहुंचाते हैं इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। दे स्टिमुलेट दिस न्यूरॉन, एंड व्हेन दिस न्यूरॉन आर स्टिमुलेटेड ऑफ कोर्स nerve impulse generate here in this neuron, nerve impulse reach here, and as a result of which exocytosaccharin and oxytocin is released. And another stimulus for the release, I will explain it with the help of diagram, don't worry, but let me first explain orally all the stimulus which are responsible for the release of oxytocin. The another stimulus for the release of oxytocin is let down reflex or suckling reflex। suckling reflex या let down reflex क्या होता है? जब बच्चा माँ के ब्रेस्ट को सक करता है तो ये इसको सकलिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। उसकी वजह से ब्रेस्ट में जो है कुछ सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं विच आर आल्सो कॉल्ड बैरो रिसेप्टर। तो बैरो रिसेप्टर मीन टू से न्यूरॉन के फॉर्म में होते हैं, तो वो बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। रिसेप्टर मीन वो न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाते हैं, तो उनमें नर्व इम्पल्स इनिशिएट हो जाता है। वो नर्व इम्पल्स पहले स्पाइनल कार्ड को चला जाता है, फिर स्पाइनल कार्ड से नदर न्यूरॉन के थ्रू हाइपोथैलेमस तक पैगाम पहुंच जाता है, तो हाइपोथैलेमस में ये न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये न्यूरॉन फिर इन रिस्पांस ऑक्सीटोसिन रिलीज करते हैं, और ये फिर क्या करते हैं, ये फिर जो है मिल्क को जो है मेमोरी ग्लैंड से रिलीज करते हैं, और वो मिल्क फिर बच्चे के मुंह में आ जाता है। सो आई विल एक्सप्लेन all these two main stimulus, stretching of the uterus or cervix, which then
result in release of oxytocin and let down reflex with help of a diagram. Let's suppose this is the uterus and this is the cervix region and this is the birth canal. So when usually pregnancy reached to the end, so then the head of the baby reach here to the cervix region. That's the head of the baby. And here are baroreceptors are present in the form of neurons. So when, let's suppose this is the baroreceptor, which is present in the, many baroreceptors in the form of neurons are present in the wall of the cervix. So when the head of the baby touches these baroreceptors, so as a result, or when it stretch the cervix, so these baroreceptors are activated. So these baroreceptors, what these are? Neuron. So these neuron then send information here to these neuron. So as a result of stretching of the cervix because of the engagement of the head in this region, so then, or the trapping of the head in this region, nerve impulse initiate here, the nerve impulse reach here, and then the nerve impulse pass from this neuron to this neuron because of release of neurotransmitter here in this region. The neurotransmitter bind with its receptor on this neuron, and as a result, nerve impulse initiate here in this neuron also. Then when nerve impulse reach here, as a result, again, the vesical membrane fused with the neural membrane and exocytosis occur. As a result, oxytocin are released here. When oxytocin is released here, then oxytocin enter into the blood, and through the blood it reaches to the wall of the uterus. The wall of the uterus consists of usually of smooth muscle. So and these smooth muscles are the receptor of oxytocin. So the oxytocin bind with its receptors. When oxytocin bind with its receptor, then which are present on smooth muscle cell, then this smooth muscle is a result contract. ये contract हो जाते हैं. जब contraction हो जाती है तो is a result बच्चा जो है, जो यहाँ पे जो बच्चा है वो पुश होना स्टार्ट हो जाता है और बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाता है बच्चे का. This contraction of the uterus because of the effect of oxytocin, this called labor contraction. इसको क्या कहते हैं? Labor contraction कहते हैं. और oxytocin का जो रिलीज होता है वो जो है with intervals of time होता है. For example, oxytocin रिलीज हो गया, अब जो है थोड़ी देर के लिए उसका रिलीज होना स्टॉप हो जाता है, फिर थोड़ी देर में जो है थोड़ी देर बाद फिर उसका रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, फिर स्टॉप हो जाता है, फिर रिलीज होता है, फिर स्टॉप होता है. इसलिए जो लेबर कंट्रैक्शन होता है वो भी वक्फे में होता है. ऐसे कंट्रैक्ट होता है फिर रिलैक्स होता है, कंट्रैक्ट होता है फिर रिलैक्स होता है. So this why because the labor contraction occur also in with interval of time, because the oxytocin also releases what with interval of time, not continuously release. Mean to say oxytocin जो है वो continuously release नहीं होता है, वो pulses के form में release होता है, with interval of time release होता है. So this was the one stimulus, mean to say stretching of the cervix was the one stimulus for the release of oxytocin. Another stimulus for the release of oxytocin is was let down reflex. So let down reflex mean, let's suppose this is the breast, and here are the mammary gland present inside the breast. These are the ducts of mammary gland. So another mammary gland, and these mammary gland leave to the outside. And above the mammary gland myoepithelial cell, you may say smooth muscle cells are present. In these smooth muscle cell contain receptors for oxytocin. Oxytocin, when this, let's suppose this is the mouth of the baby. When the baby touched the nipple of the mother, so here the nipple of the mother are again also stretch receptors are present. So these stretch receptor stretch, as a result of which, or this they are stimulated,
these neurons end in the spinal cord. For example, this is the spinal cord, and here in the spinal cord they end. This is the spinal cord. In the spinal cord, they make synapse or contact with another neuron. This neuron reach to the brain to hypothalamus, and here it synapse with these neuron, oxytocin synthesizing neuron. So when the baby suck the nipple of the breast, so as a result these neurons become activated and nerve impulse generate here, the nerve impulse reach here, and then neurotransmitter released here. This neurotransmitter initiate a nerve impulse in this neuron also. इस न्यूरॉन में nerve impulse भी initiate हो जाता है, फिर ये nerve impulse आ जाता है, इस न्यूरॉन तक पहुंच जाता है. तो as a result nerve impulse generate here in this neuron. This nerve impulse reach here to the end of neuron. As a result, again exocytosis occur, and due to the exocytosis, neurotransmitter are released here. So these neurotransmitter enter into the blood, it reach here to the breast, and in the breast memory glands are present. On the myoepithelial cells which are present above the memory gland are the receptor for oxytocin. So this oxytocin then bind with its receptor present on myoepithelial cell. These myoepithelial cell then contract. When it contract, of course, inside the memory gland milk are present. Then because of the contraction of these memory gland, the milk ejects and come into the mouth of the baby. This is called let down reflex. Let down means नीचे उतारा. So इस reflex ने क्या क्या milk को नीचे उतारा अपने इस बेबी के माउथ में. That is why it's called let down reflex or suckling reflex, because बेबी जब मादर के ब्रेस्ट के निपल को सक करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है. उसकी वजह से पहले ये न्यूरॉन में इन नरों में जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाता है, नर्व इम्पल्स पहुंच जाता है थ्रू स्पाइनल कॉर्ड टू द ब्रेन. ब्रेन में उन न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर लेता है जो ऑक्सीटोसिन सिंथेसाइज करते हैं. उनमें नर्व इम्पल्स इनिशिएट हो जाता है, नर्व इम्पल्स इधर आ जाता है, उसकी वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है. ऑक्सीटोसिन ब्लड के थ्रू पहुंच जाता है मेमोरी ग्लैंड के ऊपर जो स्मूथ मसल्स है वहाँ तक, वहाँ पे अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर ये मायोएपिथेलियल कंट्रैक्ट हो जाते हैं. और मायोएपिथेलियल जब कंट्रैक्ट हो जाते हैं उसकी वजह से मेमोरी ग्लैंड कंट्रैक्ट हो जाती है, और मेमोरी ग्लैंड में जो मिल्क होता है वो बच्चे के मुंह में आ जाता है. सो दिस वाज द अनदर स्टिमुलस. One point, sorry to say, I didn't mention in ADH, about ADH, which is mentioned in federal book. So if ADH secretion is inhibited, अगर ADH जो है उसकी secretion नहीं होती या कम होती है, so then what will occur? So low secretion of ADH secretion अगर inhibited है, ADH secretion inhibit, अगर low secretion of ADH है तो या लो ADH secretion, उसके रिजल्ट में क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट. सो ऑफ कोर्स वाटर के अगर ADH नहीं है तो जैसे ही इधर ब्लड फिल्टर होता है, सो ऑफ कोर्स ब्लड से वाटर फिल्टर होता है ऑफ कोर्स, तो ये वाटर इधर आएगा जिसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं. ये वाटर इधर से पास होके इधर आएगा तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं होगा, तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन बनेगा. मीन टू से बॉडी से लॉस ऑफ वाटर ज्यादा होगा. This loss of water in the form of diluted urine or in the form of large volume of urine, this is called diabetes insipidus. So diabetes mellitus is another condition about which I will talk when I will discuss insulin hormone. So if ADH secretion is decreased, then a condition called diabetes insipidus will occur. What is diabetes insipidus? Diluted volume formation or loss of water in the form of urine because of lack of ADH. This is what called diabetes insipidus. आपको MCQs में ऐसा भी आ सकता है कि अगर ADH की secretion inhibit हो जाए, it will result in which condition? Diabetes insipidus, diabetes mellitus, etc. None of these, both of these. So diabetes insipidus is caused if ADH secretion is decreased. हाँ, अगर ADH की over secretion हो जाए, तो over secretion of ADH causes many problem in the kidney. Okay.
about which I will talk when I will discuss the urine formation. So now let me